Welcome to Washington America Show. Today, your host Kashif Suhail is in Springfield, Virginia. We are with Metro Mortgage. It's an excellent mortgage company, and it's relatively new in the market, but they're going to take the market by storm. Why? Because they have ocean of experience. They have ocean of knowledge. They have almost 2 decades of experience, and both of them are attorneys as well. So you are talking about professionals who have all the knowledge of all the aspects of mortgage, as well as the legal point of views that you might face on the way. So they know from A to Z. They know everything. So once you'll contact them and get your loan process from them, started from them, you don't have to be worried about anything because they know every in and outs. So they'll take care of everything. So Assalamu alaikum, Mr. Wani. Walaikum salam. Assalamu alaikum, Mr. Rana Kassar. Walaikum salam. So we have few questions. These questions are from everybody, from you, from me, from everybody. So these are very general questions and common questions they'll explain so that you know the Metro Mortgage and you feel very comfortable to come to their office. They are excellent. Why? As I said, they have all the experience. Mr. Wani, almost 15 years experience in mortgage. Mr. Rana Kassar, almost 2 decades, almost 20 years, and both of them are attorneys. Okay, Mr. Wani, how hard is it to get the mortgage? Because people should know if they decide to buy a house, they should know the mortgage process. How do you guide your clients about mortgage? Is it tough process? Well, as far as mortgage, to get a mortgage loan, it's not a very tough process. However, to get started with, you should have a stable income. We at Metro Mortgage, our president, Mr. Rana Kassar, who has a 20 years experience, and me, I have a experience of 10-15 years, and we have a robust process. In our system, we have an automatic process. We put the information of the borrower in our system, and in our automated system, it checks the borrower's income, his assets, and we outrightly tell the borrower if he can qualify for a mortgage. If the borrower's income is stable, then he is qualified, then he is not worried. And if his credit is slightly good, like right now the scores required for loans, they range from 600 above. So if the credit score is this and his income is stable enough, so he shouldn't be worried. Then he should just call us and we'll take it from there. Mr. Kassar, would you like to add something? Yeah, as Mr. Wani just explained for all of you that basically when you start a loan process and you're planning to buy a house, I will definitely advise most of our clients that first call any mortgage company like us and try to evaluate your financial abilities first. The first thing we want to see is of course your credit score. Then we want to see how many assets you have. Assets mean how much down payment you are planning to put as a down payment. And then of course we want to see your income. So basically if you qualify for that, we can give you a challenge that in the market we are one of the best company, and we can match all kind of rates, but again your credit should be as per our guidelines. So basically we are not new in the market. Yes, as a company we just started with a new banner, but I've been in the market for last 20 years, and as Mr. Wani explained, he's also a very talented attorney, and he's also a member of New York Bar Association and American Lawyers Association and Bar Association, and he's extremely talented guy, and we mashallah have a very good reputation among all our Fannie and Freddie and FHA approved lenders. And we can assure you that if you contact with us, we can give you the best rate in the market, we can match any rate in the market, and we can give you the best closing cost for your loan also. And right now, because of this COVID-19 situation, I know there are a lot of people who are in financial crunch right now, but even then we have a very excellent programs for them. So please contact with us, and after this I guess interview, you can also see the information about our company and the contact number. So please do contact us. Thank you so much, Kashif. Consumers always have this question, refinance. All the homeowners think about refinance every once in a while. So Mr. Wani and Mr. Kassar, please let us know about refinance. Who should consider refinance? And if people are considering refinance, what should they do
to contact you, what should they have? So, as Mr. Rana was just talking about the refinance deal. So, if your rates are higher and you see in the market the rates are getting lower because of this COVID-19, the rates have come down, and they are historically, I would say, rates are at lowest right now. So, if somebody has a higher interest rate when he purchased or refinanced his house, it's a time to refi. What refinance does is that it lowers your monthly payment, and you skip like you generally 2 payments on your mortgage. So it's good if your interest rate is higher. So you should contact us or any mortgage company. Hey, my interest rate is right now this, and I want to refi my loan and this. Then there are criterias, of course, and fortunately we are signed up with some best lenders in the country who have like very good rates, and I can assure you we can beat any other mortgage company in terms of the rates. And if you have questions, our number is there on our website, on our cards. Anyone can call us and we will advise. Okay. Thank you. Mr. Rana Kaisar Iqbal, please explain something more so that people always have question about refinance. Yeah, right now, as Tanveer just explained, that historically in last actually 20 to 30 years, if you just Google it, this is the best time to refi your home mortgage. Why? I mean, unfortunately, because of this COVID-19 situation, I know most of us, they are facing a lot of difficulties because of the lockdown situation. But when there is a crisis, there is an opportunity for some of the people. So I would say most of the homeowners who already owns a mortgage or who already have a high interest rate, like 4% or above is, in my eyes, 4% or above is a high interest rate in this market. So any of us, is here to help you. And please call us, and we can explain you how we can lower down your monthly mortgage rates. Plus, we can skip at least 1 to 2 month payments for the coming months, just to ease up. And there's another thing I want to mention here, that we are expert in not only Fannie and Freddie Mac conventional loans, we also expert in FHA loans and Veteran Affairs loans, VA loans. And for most of us who are veterans, there's a good news right now. There are VA loan without any down payment. So please, if you are a veteran and you are planning to buy a house, do contact with us. We have a loan product without any down payment for VA, and FHA is really good product right now. So please call, and we can explain on case to case basis. Cashing out mortgage, please explain, what do you guide about cashing out? So cash out is like that if somebody has an equity in his house. Usually the guidelines for cash out refinance is you can go up to 80 LTV, that is loan to value, right? So if somebody I'll give you an example. If somebody has a house valued at 100,000 and he has a loan balance of 60,000, he can get like a cash out of 20,000, because the max we can go to 80%. So that's how the equation is. So if somebody has an equity in his house and wants some cash, probably to help his child to go to school, or to help do some constructions on the house, do some improvements, he can of course avail the opportunity, and we can guide. Yeah, pretty much explained by Tanveer. The only thing I want to add with this cash out refinance, there are some times when people need cash from the equity of the house to use it for certain purpose. So for those people who have enough equity, I would say more than 50% loan is paid on the property and they have more than 50% equity in the house, there's another opportunity you can avail, that if you are planning to buy any small business and you need a cash to show as a down payment with that small business loan, then the best way you can use that cash, just take equity from your house, apply for a cash out refinance, get some cash out of that equity, and you can also put that payment as a down payment for a small business purchase. So that is a good opportunity for those people who are planning to buy a small business also. I'm a realtor and people ask me all the time. Actually, this is one of the most asked questions from the consumers. Which loan is better, FHA or conventional or VA? I always explain them, but here we have mortgage brokers. So please explain which mortgage program is better, loan program. Of course,
better is to have a conventional loan because there is no MIP. However, if the borrower's credit is not more than 680 and his income is lower, in FHA there is a leverage that we can go to 55 DTI is allowed. And however, it's not the case in conventional loan. So if your credit is lower and your income is not as good as it should be to qualify you as a conventional loan, so then we recommend that you should go for the FHA loan. However, if your credit is good, if it is more than 680, and if your income is good so that your DTI is less than 50, then of course you should go for a conventional loan. So this is it of this covers the whole. So I would say it depends on case to case, and depends on the credit of the borrowers and the income of the borrower. Yeah, as we were discussing about the different loan products, yes, of course there are all three category loans are available for all of our clients. Most of the clients, as Tanveer just explained, that qualify for our conventional loan. Conventional loan usually go with the lower PMI, and conventional loan, of course, we go with those clients who have good excellent credit scores. But for FHA loan, if the income level is little low and sometimes the credit is also not good, so we can qualify that person with the FHA. The only difference between conventional and FHA is that there is a PMI, private mortgage insurance, involved in that loan. With FHA, it's actually almost 0.85% of your loan amount, and it is for the life of the loan. But conventional, if you buy a loan and you are also paying less than 20% down payment, and you apply for a mortgage and even you are paying a PMI, that PMI rate is little bit lower than the FHA. Plus, whenever your house wins the equity around 78 to 80%, the PMI just fizzle out. And the third product is VA loan. VA, as I explained, is just for the veterans, all the veterans, and it's without any down payment. And VA loan is also little bit flexible because sometimes the veterans they don't qualify, but with the help of this VA funding fee and all other things, they can be qualified. So these are the three different categories, but again it depends that our client has a different situation, so we advise our client according to their situation. Okay, we'll sum up our English segment. Finally, I'll repeat what I just explained in the beginning of the show. We have thousands of loan officers. We need loan officers that are easy to work with, friendly, down to earth, just like common people. They should not be very tough to work with. So these are the guys you need to work with. These are the mortgage brokers, loan officers you need to work with. I know them. Because I'm in this field, I'm a realtor for a few years, so I have been dealing with loan and mortgage brokers, and I found them very down to earth. Mr. Wani is not only a loan officer to me, he's a friend of mine, and he is very down to earth. He is always ready to help you. He'll help you, he'll make sure that you get the mortgage. Your success is his desire. So contact them. Number is on the screen. Contact them. Don't hesitate. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान काशिफ सुहेल हाजिर है। वाशिंगटन अमेरिका शो की रिकॉर्डिंग के सिलसिले में मैं मेट्रो मॉर्गेज स्प्रिंगफील्ड वर्जीनिया में मेट्रो मॉर्गेज के ऑफिस में इस टाइम मौजूद हूँ, और हमारे साथ बहुत टैलेंटेड मॉर्गेज ब्रोकर्स, एक्सपीरियंस्ड, डाउन टू अर्थ, वेरी एक्सपीरियंस्ड मिस्टर तनवीर वानी और राना कैसर इकबाल। दे आर ओशन ऑफ नॉलेज। हम आज इनसे सीखने की कोशिश करेंगे कि मॉर्गेज की जो बेसिक चीज़ें हैं, जो आपको हाउस बाय करने के लिए आपको जो बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है, ये आपको गाइड करेंगे। ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। और डीएमवी एरिया में जितने भी हमारे दोस्त हैं हाउस बाय करने के लिए सोच रहे हैं, आप इनसे रब्ता करें।
लोन ऑफिसर आपको सैकड़ों मिल जाएंगे, थाउजेंड्स ऑफ लोन ऑफिसर्स मिल जाएंगे, बल्कि ये तो GED करके आप पास हो सकते हैं, लोन ऑफिसर बन सकते हैं। मगर आपको क्या चाहिए? आपको ऐसे लोन ऑफिसर चाहिए जिनका जो बिल्कुल एक्सपीरियंस इनका बहुत ज़्यादा, he has almost 2 decades experience, both of them are attorneys. He is licensed to do law in New York and he is also going to do in Virginia as well. So हम इनसे कुछ पूछने की कोशिश करेंगे। वानी साहब, आप अपने क्लाइंट्स को बताएं कि वो आपके पास क्यों आए। ये तो शेर बन गया, आप अपने क्लाइंट्स को बताएं कि वो आपके पास क्यों आए। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक हमारे पास आने का ताल्लुक़ है, क्योंकि जैसे काशिफ साहब ने हमारे इंट्रोडक्शन में बताया कि हमारी एक्सपीरियंस और नॉलेज के हवाले से ये बता रहे थे, वी हैव बीन इन द बिज़नेस फ्रॉम लास्ट मोर देन अ डेकेड। तो मेरी जो तालीम है, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से, जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से, और न्यूयॉर्क से मैं वकालत लाइसेंस याफ्ता भी हूँ और ABA का मेंबर भी हूँ। इस हवाले से मुझे जो मॉर्गेज की इंफॉर्मेशन है, जो इस फील्ड की जो नॉलेज है, अल्लाह का करम है कि बहुत खासी है। और जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो मैं अपनी नॉलेज के मुताबिक उसको एडवाइस करता हूँ कि वो कैसे क्वालिफाई हो जाए और किस तरीके से उसको बेहतर से बेहतर इंटरेस्ट रेट मिल जाए और बेहतर से बेहतर सिनारियो मिल जाए कि उसको क्लोजिंग कॉस्ट भी बहुत कम लानी पड़े। उस तरीके से मैं एडवाइस देता हूँ। और क्योंकि मेट्रो मॉर्गेज कंपनी के पास बहुत ही अच्छे लेंडर्स हैं, जो साइन अप हुए हैं, जिनके हम पार्टनर्स हैं, तो क्योंकि हम उनके साथ साइन अप हुए हैं, हम अपने बोरोवर्स को वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो बेहतर इंटरेस्ट रेट उनको मिल जाए। तो हमें कांटेक्ट करें, अगर कोई भी इंडिविजुअल सवाल हो तो हम हाजिर हैं आपके जवाबात के लिए इंशाअल्लाह। जी राना कैसर साहब, आप अपने इल्म से मुस्तफ़ीद फरमाएं अपने क्लाइंट्स को। जी शुक्रिया काशिफ, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आज आपसे बातचीत का मौका मिला। जैसे कि अभी तनवीर आपको एक्सप्लेन कर रहे थे कि हम दोनों जो हैं, हमारी बैकग्राउंड ये है कि मैं 1988 से अटर्नी हूँ और तनवीर जो हैं ये भी पिछले 14 साल से तकरीबन ये भी लॉ के प्रोफेशन से मुंसलिक हैं। और मेरा बैकग्राउंड भी यही है तनवीर की तरह कि मैं बेसिकली मर्केंटाइल और कंपनी लॉ का अटर्नी था। और फिर हमने ये 2001 में यहाँ मॉर्गेज इंडस्ट्री में काम शुरू किया और तकरीबन 20 साल हो गए हैं मुझे इस काम में अमेरिका में, और ऑलमोस्ट 28 ईयर्स बैंकिंग और मर्केंटाइल लॉ और कंपनी लॉ जो है उसमें काम करते हुए। तो एक तो एक्सपीरियंस और एजुकेशन ऑफ कोर्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है जब भी आप किसी भी प्रोफेशन में होते हैं। नंबर 2 मेरी नज़र में यह है कि आपको जब भी किसी प्रोफेशन में आप होते हैं तो आपके अंदर एक प्रोफेशनल एथिक्स जो है उनका होना बहुत ज़रूरी है। तो अनफॉर्चुनेटली चूँकि हमारी इमिग्रेंट कम्युनिटी पिछले 40 साल से तकरीबन अमेरिका में ज़्यादा मेन स्ट्रीम में आई है, तो बहुत सारे प्रोफेशंस में कुछ लोग अनवांटेड थे और उन्होंने लोगों के साथ जिस तरीके से बिहेव किया वो दैट वाज नॉट प्रोफेशनल, और प्रोफेशनल एथिक्स जो होती हैं उनका भी ख्याल नहीं रखा गया। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो चीज़ है इस कंपनी में, मेट्रो मॉर्गेज में, जो हमने एक कंपनी का ज़ाब्ता अखलाक बना रखा है, वो ये है कि सबसे पहले तो ट्रू नॉलेज अबाउट योर प्रोडक्ट जो आप करने जा रहे हैं हमारे साथ, हम आपको उसका ट्रू नॉलेज देते हैं। नंबर 2 हम आपको बेस्ट एडवाइस देते हैं कि आपकी क्रेडिट, आपकी इनकम, आपकी जो भी हिस्ट्री है उसके हिसाब से हम आपको कैसे हेल्प आउट करेंगे। और तीसरी चीज़, जैसे तनवीर अभी आपको एक्सप्लेन कर रहे थे कि हमारे पास बेस्ट USA के जो लेंडर हैं वो हमारे पार्टनर्स हैं, और उनकी वजह से ये है कि हमारे पास बेशुमार ऑप्शंस हैं और हर किस्म के क्रेडिट स्कोर के लिए हमारे पास लोन प्रोडक्ट है, और इसमें परचेज, रीफाइनेंस और इसी तरह जैसे कन्वेंशनल लोन है, FHA लोन है, वेटरन अफेयर्स का VA लोन है, इवन USDA लोन के लिए भी हमारे पास हेल्प कर सकते हैं। तो एक चीज़ वही कि प्रोफेशनलिज्म, नंबर 2 नॉलेज, नंबर 3 आपके साथ ऑनेस्टी के साथ हम जो काम करेंगे फ्रॉम डे 1 टू एंड ऑफ द प्रोसेस। आपके साथ जो भी कमिटमेंट होगी हमारी कंपनी की वो बिल्कुल उसके ऊपर होगी, और इंशाल्लाह हमारी पिछले 20 साल से जो हमारी यहाँ पे DMV में जितनी भी कम्युनिटी है और स्पेशली हमारी जो साउथ एशियन कम्युनिटी है उसमें आप हमारी रेपुटेशन को चेक भी कर सकते हैं। और अमेरिका में तो चूँकि बड़ा ईजी है, आपको गूगल पे जाइए, आप जाके रेटिंग चेक कीजिए
और अगर आपको कहीं कोई नेगेटिव एक्टिविटी किसी ब्रोकर कंपनी की या किसी की मिलेगी तो आपको पता चल जाएगा। तो हम यही सारी कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यहाँ तशरीफ़ लाइए, हमारे पास आइए, और जो भी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है, चाहे डिफ़िकल्ट है या चाहे बड़ी एक्सीलेंट पोजीशन है, आप हमारे पास तशरीफ़ लाएं और हम आपकी बेस्ट जो है ना हेल्प करने की कोशिश करेंगे और आपको वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री में जो रेट अवेलेबल है वो देंगे। और वी कैन चैलेंज कोई भी बंदा जो किसी भी इंटरेस्ट रेट के लिए क्वालिफाई करता है, हम उसकी जो बेस्ट यानी क्लोजिंग कॉस्ट है उसको उसके साथ ऑफ़र कर रहे हैं, जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है और इस मार्केट में स्पेशली करना आसान नहीं है। लेकिन हमारे पास कुछ टूल्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो आप ज़रूर तशरीफ़ लाइए और बहुत शुक्रिया। आखिरी क्वेश्चन हम कंक्लूड करने की तरफ चलते हैं। मेट्रो मॉर्गेज के पास एक्सक्लूसिव मेंबरशिप है एक मॉर्गेज कंपनी की, जो लोन प्रोग्राम की, वो आपको बताएंगे, जो कि इधर किसी के पास वो नहीं है। वो आप उसके लिए उनसे रब्ता कर सकते हैं। कॉल आप इनको करें, मैं रिकमेंड करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मार्केट में बहुत अरसे से हूँ, सालों से मैं डील करता हूँ लोगों से। लोन ऑफिसर्स, आपको लोन ऑफिसर बनने का शौक़ है तो आप बड़े आराम से, कॉलेज में जाते हैं, आप हाई स्कूल किया हुआ है तो आप थोड़ा सा पढ़ के तो आप लोन ऑफिसर बन जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि आप किसी ऐसे लोन ऑफिसर को हायर करें जो कि आपकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी है, तो वो इंसान आपका जो है ना लोन करेगा तो ठीक है, वो लोन कर सकेगा, दैट्स फाइन। मगर अगर रास्ते में बहुत से प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, हर्डल्स आते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, टेक्निकलिटीज़ होती हैं, उसके लिए आपको कौन चाहिए? उसके लिए आपको मिस्टर तनवीर वानी चाहिए, उसके लिए आपको राना कैसर इकबाल चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है, इनके पास नॉलेज है, एंड और ये मार्केट में है साल से हैं, ऑलमोस्ट 20 सालों से हैं, और ये डाउन टू अर्थ हैं, बहुत आजिज लोग हैं, ये मगरूर नहीं है। बाज़ लोग इधर गरूर करते हैं, वो बात करते हैं वो आपको अच्छा फील नहीं होता, आपके साथ बहुत वो टफ पेश आते हैं। तो यू डोंट वांट दैट, यू वांट पीपल हु आर वेरी डाउन टू अर्थ एंड नाइस पीपल। सो राना कैसर एंड तनवीर वानी, थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Kashif Sahab. It was a nice introduction, and everybody should contact Metro Mortgage. And have a blessed day. Keep watching Washington America Show. Thank you from Kashif Suhail.